Let us suppose I have written Excel here, right? Now the task is to bring this Excel in all of the selected cells below. नीचे जितने भी cells है, I wanted the Excel to be appeared in all of the cells. So what is the shortcut? Control D. Control D. D for down. Okay. So what I have done, I have written Excel here, and the task is to copy this Excel or bring this Excel in all of the below cells. So what I'll do, I'll go with this Control D. D for down. Right. Similarly, if I wanted to bring this Excel into the right side, so what? Yes, Control R for right. Now the next is to bring the data upward, and Control U is for underline. Yeah. So for right and down, we have a shortcut. Means combination of two different keys. But if I wanted to get the data into up or left, so there is no any specific shortcut like Control U or Control L, but we can go with Alt E I U. Alt E I U. And there are two types of shortcuts that we have discussed right now. One shortcut starts with Control, and another shortcut starts with Alt. So in Excel, we will see the shortcuts that would be either starting from Control, or we can start the shortcut with Alt. So the Control shortcuts are pressed all together, right? Let's say Control C, Control V, Control X. Alt are pressed one after another. So if I'm going to press Alt E I U, so what I have to do? Like this. First, I have to press Alt, then release the Alt button, then E, then release the E button, I, and then U. One after another, it will work. Alt E I U. Right. Alt E I U. Similarly, for left, Alt E I L. So there are four shortcuts for down, for right, for up, and for left. चार shortcuts हैं हमारे पास. Down के लिए है, right के लिए, up के लिए, and left के लिए. For down हमारे पास क्या है? We have Control plus D एक साथ. Control D. For right, we have Control R. Right. Up के लिए कोई ऐसा direct नहीं है. So we can go with Alt E I U, one after another. इसी तरह से for left, Alt E I L, and we can use this pattern for down and right also. Same pattern for down and right. Alt E I D and Alt E I R. So either you can use this shortcuts for down and right, or even you can use this. So these are the four shortcuts that we have seen. Now let us see another scenario. Suppose I have selected this range and I just wanted to write Excel in all of these cells. कैसे करेंगे बताइए? I just wanted to write Excel in all of these cells. Now let us see. I have selected the data range. I have written Excel. I am going to write Excel. Control Enter. Done. Control Enter. So Control Enter will work in the selected range. Suppose I am going to write 1 single. Control Enter 1. I am going to write equals to 2 plus 4. Control Enter. It says 6. Right. So 2 plus 4, 6. So this will work on the selected cell. Anything I will be writing, be it be formulas, be it text, be it numbers, anything. So this will work. Now clear? Normally हम लोग क्या करते हैं? First we select और फिर लिखने के लिए हम लोग यहाँ चले जाते हैं. हमें क्या करना है? सिलेक्शन करने के बाद माउस को टच करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देना. ये चीज है. So first we have to select the thing, area, any area could be, and I can write anything, ABC. And it could be multiple range also. Suppose I have selected this, and after pressing Control button, let's say I have selected this, I have selected this, I have pressed Control button. Control button के साथ हम select कर सकते हैं. Now let's write ABC. Control Enter. So it would be ABC in all the entire selected. चलिए, ठीक है. Okay. Now let us move further.
Now, how to select a column? How to select the entire column? So to select the entire column, manually we can do. Manually everything is possible, but I can use control space. Control space to select the entire column. Right. And for entire row, shift space. Shift space for row and control space for column. Now the matter is कि कैसे याद रहेगा? How we will remember this? C for column, C for control. Simple सा. C for column, C for control. So control space for column and shift space for row. अगर मैं control shift space कर दूंगा तो सब कुछ select होएगा. Everything is selected. Control shift space. Right. So shift space, row, control space, column, like this. Now I have to insert a new column. Let's suppose I have written something A, B, C, D. Now I wanted to insert here. So क्या करेंगे? Most of us are using laptop, right? Laptop में क्या होता है? दो तरीके का laptop होता है. We have two types of keyboard into our laptop. One is the bigger one, 15-inch laptop where we have special number keypad in the right side. वहां पर अगर plus sign आपके पास है, so we can use that plus sign with control button. Control के साथ उस plus sign को करेंगे, so it will insert the column. Now, if I am going to use the small keypad, small keyboard है, जहां पर plus sign is with the equals to sign is with the plus sign. Plus के साथ आपके equals to आएगा, देखिए आप, है ना, backspace के पहले. In that case, I have to press control shift. Shift के साथ I have to use plus sign. So if I am using the number keypad, then control plus. If I am going to use that the key button, which is plus and equals to, both are in the same key. उस केस में क्या करेंगे? Control shift plus. Now to delete, control minus, control minus, control minus, control minus to delete a column. And same is applicable for row also. Similar. If I have selected a row, I have to insert to control plus or control shift plus, and to delete control minus, like this. Now, what is the shortcut to insert a sheet? We have two sheets right now. Sheet 1, sheet 2. To add a sheet, I can click on this plus button. ऐसे हम जा सकते हैं. Right. Now, but to insert a sheet using a shortcut, what we can do? We can go with Alt I W. Alt I W, Alt I W, Alt I W, Alt I W. और शीट का बाय डिफॉल्ट क्या होता है? जहां पर भी मेरा एक्टिव शीट है, एक्टिव शीट वेयर आई एम राइट नाउ, इट विल इंसर्ट ए न्यू शीट इन द लेफ्ट साइड. वो लेफ्ट साइड होगा, आप जाके आगे जाके मूव करा सकते हो, लाइक दिस. सो ऑल्ट आई डब्ल्यू, ऑल्ट आई डब्ल्यू, ऑल्ट आई डब्ल्यू. I for insert, W for worksheet, Alt I W. Right. Now to delete, Alt E L, Alt E L, Alt E L, Alt E L. See, to insert a sheet, this is Alt E, sorry, I and W, where I stands for insert and W stands for worksheet, Alt I W. To delete, Alt E L, right? Alt E L. ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज, everything in Excel, it's E stands for Excel. It does not mean it's something stands for something जहां पर हमने I के लिए insert किया था. But we have to use like this one, EL. These are the keywords given to a specific set of activities. Alt EL, Alt IW. Now the question is, I just wanted to add 50 sheets. 50 sheet add करना है. So how to do that? How we can do that? How we can add 50 sheets? The one step is to Alt IW. अब देखिए क्या करना है. After pressing Alt IW, I'll press F4. देख लो, the moment I am pressing F4, it's inserting the sheet. F4. So F4 key क्या करता है? Function key. F4 means the function key. F1, F2, F3, F4, which is in the top. So F4 is the function key that is used to repeat the last action. जो हमने last किया था. If I wanted to repeat that one, so मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे F4 को use करना पड़ेगा. And in some of the systems, directly F4 key is not working. In that case, we have to press FN key. आपके Windows बटन के लेफ्ट साइड में आता है FN key.
सो Fn की के साथ मुझे प्रेस करना पड़ेगा F4 एंड इट विल वर्क. नाउ टू डिलीट दिस द सेम स्टेप्स, Alt EL कर लिया, then F4. So it will keeps on deleting. So F4 is used to repeat the last action that we have performed. देख रहे हो, डिलीट हो गया. Done. This is clear. F4 is used to repeat the last action. F4 key. See, Excel is only having an option to go one by one. But if I wanted to add 10 sheets in a single go, so I have to automate that process. ऑटोमेट करना पड़ेगा. जो हमने 10 बार में किया उसको एक बार में करना पड़ेगा. कोई बता सकते हैं हाउ कैन वी ऑटोमेट द थिंग्स इन एक्सेल? मैक्रोज. सो आगे जाके कवर करेंगे हाउ वी कैन डू दिस. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं सो दैट आपको पता चल जाए कि हाउ मैक्रोज आर पावरफुल, जिसको वीबीए बोलता है. आई होप यू हैव हर्ड अबाउट मैक्रोज और वीबीए, राइट? एग्जांपल दिखाता हूं. डोंट गो दिस एग्जांपल एज ऑफ नाउ, बट आई एम लेट्स मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी कैन डू. Now, so this I am having one sheet. Let us run this one. कितने sheets हो गए देखिए. So later on the next training is the VBA programming, which we can do after the Excel training. So this is very powerful. अभी right. So we have seen how to insert a sheet, how to delete a sheet, and use of F4. Now, how many rows are there in Excel? कोई बता सकते हैं how many rows are there in Excel? कैसे काउंट होगा हाउ मेनी रोज? सी आई जस्ट प्लेस माय कर्सर हियर और कंट्रोल डाउन एरो कर देंगे. डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो. सो आई विल बी गोइंग टू एक्सट्रीम बॉटम व्हिच इज 1048976. 1048976 10,48,576. Similarly, how many columns? Control right arrow. अब राइट एरो में तो ऐसे आ रहा है XFD. तो बता सकते हैं कितना काउंट होगा, कैसे काउंट करेंगे? लेट अस सी हाउ टू काउंट दिस वन. सो आई विल बी सिलेक्टिंग द एंटायर रो. अब मैं क्या करूंगा, जस्ट रो को सिलेक्ट करूंगा. देखिए क्या आ रहा है, व्हाट दिस इज कमिंग इनटू द लेफ्ट साइड. क्या आ रहा है? सो 16,384 कॉलम्स है, 16,384 कॉलम एंड 1048576 रोज in a single sheet. Now, suppose you have been given a task that I have to enter A. ऐसे करके मैनुअली, देयर इज नो एनी कॉपी पेस्ट मेथड. ए लिखना है और ये एक शीट को कंप्लीट करना है, सिंपल सा सिंगल शीट, और मैनुअली करना है. सो हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कंप्लीट? कितना मैक्सिमम टाइम आपके एंड पे लगेगा एक शीट को कंप्लीट करने में? 1 घंटे, 2 घंटे, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. I just need to write A manually to each and every cell in this sheet. कितने लगेंगे टाइम approximately? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन. how much time will you take maximum? Let us see. अब आप बताओ कितना मैक्सिमम एक सेल को लिखने में how much time it's taking? 1 second तो half second तो लगेगा ना for one cell, half second. So these are the number of rows. 1048576. This is the number of rows. 16,384 is the number of columns. So number of cell is equals to this into this. So these are the total seconds divided by 2 for single cell, एक cell के लिए. So this is total number of seconds per total. मतलब ये half second करके लगेगा. Now let us see. Equals to this divided by 60 number of minutes, divided by 60 number of hours, divided by 24 number of days, divided by 365. It will take 272 years to complete. 272 साल लगेंगे पूरा करने में. अब देखिए क्वेश्चन क्या था, I have to enter A in each of this cell और मैनुअली करना है. तो मैनुअली करने का मतलब फिर वही हो गया बात. एंड
वी कैन यूज कंट्रोल एंटर वाला भी मेथड, बट उससे काम नहीं करेगा. कंट्रोल एंटर विल नॉट वर्क फॉर द एंटायर शीट. वो बंद कर देगा आपको. कंट्रोल एंटर काम नहीं करेगा. बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मेथड टू टेक 272 years. वी आर गोइंग टू यूज प्रोग्रामिंग. हम आगे जाके प्रोग्रामिंग सीखेंगे विच विल टेक कुछ टाइम लगेगा टू कंप्लीट द शीट. ठीक है ना. चलिए, नाउ लेट्स सपोज वी हैव मल्टीपल शीट्स. ऐसे करके काफी सारे शीट्स हैं. नाउ आई जस्ट वांटेड टू नेविगेट टू ईच एंड एवरी शीट वन बाय वन. तो कैसे करेंगे? व्हाट इज द शॉर्टकट? कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन. देख रहे हो, कंट्रोल पेज डाउन कर रहा हूं मैं अभी. पेज डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, इधर ऊपर उस साइड. पेज अप लाइक दिस. दिस इज पेज अप एंड दिस इज पेज डाउन. कंट्रोल. Now let's suppose sheet 23. This is the name report. I can rename any sheet. Let's say this is the report sheet. Double click and I can rename. Now these are the sheets and I just wanted to move into the report sheet directly. कैसे जाएंगे? How to go to the report sheet directly? The one option is to go like this. ऐसे जा सकते हैं and we can directly select that report sheet. And another option is to just right click into this area, this arrow area. Just right click here. You will be getting the list of all the sheets. Just press R and press enter. Done. You will be getting into the report sheet. Move directly into the report sheet. इस एरिया में जहां पर एरोज आ रहे हैं ना, जस्ट राइट क्लिक कीजिए. राइट क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? मेरे पास सारे सीट्स के नाम आ जाएगा. बस जहां भी जाना है वहां पर जाके डबल क्लिक कर दिए. हम टाइप करके भी पहुंच सकते हैं. आर करेंगे तो रिपोर्ट में पहुंच जाएंगे. तो डबल क्लिक कीजिए या एंटर कीजिए. यू विल बी गोइंग टू दैट शीट. So, ऐसे करके वी कैन गो टू द एग्जैक्ट शीट. उस शीट पे हम जा सकते हैं. क्लियर? द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर द मोर शॉर्टकट्स और कुछ ऑप्शंस में देखेंगे. ठीक है ना. फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा लाइट टॉपिक कवर होता है. वी आर जस्ट कवरिंग द सम फ्यू लाइट टॉपिक्स इन द फर्स्ट क्लास, ताकि थोड़ा सा आप लोगों का स्पीड और वो इन्वायरमेंट धीरे धीरे वो उस इन्वायरमेंट पे आप लोग आ जाए. राइट.